Hello everyone. Hello. I hope I'm audible, right? Hello everyone. Yes, sir. Good evening. Good evening. Yeah, all right, let's take a minute and let's get done with the good evening thing. So yeah, good evening everyone. This is Vedansh here. I'll be serving as your speaker for the next 2 days in the coming PCGT National Youth Parliament. Oh, hi Rajendra. Hello. I hope I'm audible, right? Yes, sir. Yes. Yes. All right, perfect. Chaliye. So, firstly, can someone please tell me what actually is Lok Sabha? क्या होती है Lok Sabha? All right, that works fine. Do we have any OC member here? Lay, you happen to be the OC out here, right? It's Leah. Yes, sir. Yeah. So, do we have the required number of people out here so that we can start with the session, or are we expected to wait for a while? We waited for a while, so we can start. Perfect. Cool. So I can see a number of hands. May I know the reason as to why they are here? Lok Sabha क्या होती है? So Lok Sabha basically is a 543 members. It Lok Sabha basically means on the country issues are discussed. All right, our issues are discussed. Okay. Question hour is there, and Lok Sabha, and it's the main. The representatives are Okay. elected by the आराम से देखो सुनो आज अपना technically we have our ROP session today. There is only one rule that you should remember for the coming 2 days and for your entire life whenever you are there in a conference or any sort of a place where you have multiple speakers. Do not interrupt a speaker while he's speaking. Okay, wait for your turn. That's the only and the cardinal rule for any public speaking event. हम जो youth parliament कर रहे हैं, we also call it a model parliament, right? A model Indian parliament or something model. Because yeah, लिख के मत बताओ. See, the point is we are having enough time at our disposal. Everyone will get a chance to speak. So let's not write down your answers. It will cost you your time and energy and also mine. So the only single rule is do not interrupt a speaker while he is speaking. All right. Wait for your turn. You will certainly be given an opportunity to speak. हाँ भूपेंद्र यादव जी क्या होती है लोकसभा? So Lok Sabha is one of in our Indian democracy there are 3 pillars. First is judiciary, second is legislature, and third is executive. The second pillar is legislature, and where the Lok Sabha is the first one where we decide the destiny of our nation, how the nation will our work for the next 10 years, 50 years, or 40 years. And Lok Sabha is having the most burden of the people because we are the lawmakers and we are the decider of our destiny for the next our lifetime or
for our next generation. So Lok Sabha is a very pure place where we have to sorry we have to take a decision very carefully, and we have to listen everyone point of view. Thank you, sir. All right. Thank you. Ahead. Naren Singh Good Tomar, evening, sir. sir. What is Lok Sabha? So this is and I'll be representing that. The Lok Sabha is the originating point of any public policy, or going more specifically, it is the originating point of any particular law which has its force in the Indian territory. You talked about that you have 3 readings of the bill. क्यों हम एक बार में ढंग से नहीं पढ़ सकते? So the main objective of going through 3 readings is to avoid any ambiguity. जब हम 3 रीडिंग्स करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हम पहली बार में शायद भूल जाएंगे, या प्रॉपर डिस्कशन ना होने की वजह से वो मिस आउट हो जाएगा. तो 3 रीडिंग्स उस चीज को इंश्योर करती है कि कोई भी गलती ना रहे. लाइक हम एफिशिएंसी इंश्योर करते हैं 3 रीडिंग्स के थ्रू. Why is it just 3? 2 भी हो सकता है. Ensure करना है that there exists no ambiguity. Therefore, you can have 4 times, right? 3 तिगाड़ा तो वैसे भी काम बिगाड़ा कहते हैं ना. No, sir, but in the context of the Lok Sabha in India, the Tighada does. The basic concept is when we go through the first reading, the first reading is basically the introduction of the bill by the concerned minister. That time, normal deliberation and discussion takes place in the House, where people from the ruling and the opposition present their views. What do they think about the particular bill? And when it comes to the third reading, so it is a kind of conclusion where all the deliberations and discussions are summed up. All right, madam, you are partially right, partially wrong. I'll get back to the bill procedure a bit later. हाँ, एकनाथ श्रीकांत साहब. Shrikant. So good evening, sir. My name is Sriyanshu Gupta. I got the portfolio of Dr. Shrikant Nyp. So Lok Sabha is basically the House of Representatives, in which members are elected by the common people through their single transferable vote. And Lok Sabha, unlike Rajya Sabha, is temporary in nature, and it can be dissolved on the recommendation of Prime Minister. And yeah, that's it. Okay. What do you mean by dissolving? Like वो science के experiment where you dissolve sugar in water, or what? No, sir. It's actually what I can say, like जब किसी भी member के पास clear majority नहीं रहती पूरे in the especially in the lower house, that is the Lok Sabha, so generally स्थगित. sorry, sir. No. Yes, sir. I apologize. No need to apologize, sir. मैं सवाल कर रहा हूँ, मुझे नहीं आता इसलिए पूछ रहा हूँ. सर स्थगित नहीं, स्थगित का मतलब adjournment होता है, and that's not adjournment. Dissolution is, sir, quite different. So basically it's the house dissolve कर दिया जाता है और by elections declare करता है. By elections declare कर दिए जाते हैं कि कोई new member
आके मेजोरिटी फॉर्म कर सके और अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सके। हाँ भूपेंद्र यादव साहब कुछ कह रहे थे। Sir, dissolving its vote of confidence from the House or their alliances, and we have seen this during the when our former Prime Minister Atal, when his 13 days government was dissolved by the president due to Shri P.A. Sangma was the pro tem speaker, and he announced that the House has been of India, and the reason was that he used the vote of confidence. He submitted his resignation to the president, so president ordered the conducted. Okay. Sir, falling of a government, does it amounts to dissolution of the House? हाँ निर्मला जी। So I don't think so. I am Nirmala Sitharaman as a finance minister, Lok Sabha. I don't. So dissolution always happens every 5 years after the elections are called. So the Lok Sabha dissolves. Okay, so 5 साल से पहले dissolution नहीं हो सकता उसका। It can happen if there is no government, if there is no confidence motion or anything. But after 5 years, it happens if there is confidence, if the government is sticking. No, I agree that a dissolution takes place after 5 years. That is by default practice. ठीक है, 5 साल बाद अपने आप हो जाएगा। But क्या उससे happen if new elections are called? नहीं तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि हर 2 साल में इलेक्शन कराते रहेंगे। मोदी जी तो बहुत खिलाफ है इस चीज के। तो ठाकरे साहब ने इस्तीफा दे दिया। He resigned before facing a vote for no confidence. If उद्धव ठाकरे अगर वो जाते no confidence vote में, and if it was proved on record that he has lost the majority of the House, in such a scenario, would the Maharashtra Legislative Assembly have Legislative Assembly? No, sir. At that time, the opposition parties will see if they can form the government, and they will go to the governor. The House is concerned, it is a default practice that after every 5 years, with new general elections coming up, I'm talking specifically about after a period of to be re-elected the party sense or whatever they feel like doing. The next important thing, if there is no scope for suppose like if I can give you a recent example, Kashmir, right? चली थी बीजेपी की गवर्नमेंट जम्मू नहीं कितने दिन हो सका सरकार चलाई। अब दी पॉइंट है देयर हैपेंस एट टाइम्स कि जहां मल्टी पार्टी सिस्टम होता है जिन स्टेट्स में या जैसे हमारे देश में है,
वहां पे जो कोई भी कोalition sufficient नहीं होता. No coalition had the appropriate number to form the government. Okay, and in such a scenario, when there is no one who can rest a claim for making the government, therefore the governor in the case of state legislative assembly and the president in case of your national parliament, they either call for a president's rule or they dissolve the house. Am I clear? तो 5 साल से पहले हाउस डिसॉल्व हो when there is no possible opportunity to form a government. Am I clear? Yes, sir. Is anyone having any doubt pertaining to this? पर इसमें हम बहुत ज्यादा दूर चले गए. It wasn't my intention to go there. पहला तो मेरा सवाल still remains the same. लोकसभा क्या होती है? Yes, Sudeep. Honorable Speaker, sir, good evening. Sir, answering the question that what is Lok Sabha, what I believe is Lok Sabha is a pious place, or I can say a constitutional platform where the elected members from the general public come, deliberate, and negotiate. Sir, one more point I want to add. When there was a discussion was going on with one of the delegates on the 3 readings. Now, sir, when we talk about efficiency and effectiveness, there are not only 3 readings. We need to understand it's a prolonged thing. There is the first reading, second reading, third, and the last reading. Then we have passing a bill, then bill in the other house, joint session of both the house if needed, and president's approval, and then it comes into the force. So it's not about reading, because whenever any policy or any bill comes into the picture, it's not that the politicians are only involved. There are committees which are set up. That why. So that is one of the part which I would like to highlight, where the discussion was there on the efficiency. Thank you. All right, okay. Though had a technical glitch while listening to you, but majorly it was right. Rajnath Singh, you had something. Yeah, just wanted to add to a general discussion about what Lok Sabha is, and it's one of the 2 houses of the parliament in Delhi, which makes laws, and its leaders are directly elected by the people. Its representatives are directly elected by the method of first past the post, and here it's primarily a legislative body which makes laws, just like one of the other members mentioned about the readings and stuff. So basically that's all I would like to say. Yeah. All right, Rajnath, can you tell me how many organs does the Indian Parliament have? Yeah, it's basically 3: the lower house, the Lok Sabha, the upper house, the Rajya Sabha, and the president. And the president. Very good. What's the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha? Can someone tell me? क्या difference होता है लोक सभा और राज्य सभा में? Sir, can I go ahead? अरे wait यार, 1 मिनट रुको तो सही. माननीय श्रीनिवास रेड्डी. Hello, sir. So Lok Sabha में people elect and Rajya Sabha में people elect नहीं करते. Okay. That's it. और कुछ नहीं होता, कोई डिफरेंस, कोई और अंतर नहीं आता इनमें. और होता है, और लोकसभा में 5 years भी होता है, राज्यसभा में 6 years. I couldn't hear you properly. Sir. Will you mind repeating, please? हेलो. हाँ जी. हाँ सर, लोकसभा में 5 years का टेन्योर होता है और राज्यसभा में 6 years का टेन्योर होता है. All right, Lok Sabha has a 5-year tenure, Rajya Sabha has a 6-year tenure. Okay, cool. Sounds good. Anything else?
Sukhbir Singh Badal. So Lok Sabha is the house of people in which representatives are elected by the people, by the common person. And in Rajya Sabha, it is not like that. And Rajya Sabha has the tenure of 6 years. Lok Sabha has the tenure of 5 years. And basically, the third is the Lok Sabha can can introduce money bills and make laws in it. And Rajya Sabha can't introduce money bills. This is the nation. Okay. Alright. नहीं तो पहले मुझे एक फंडामेंटल चीज बताइए, ऐसा हमें लगा ही क्यों कि हमें 2 हाउसेस चाहिए? Why can't we have a unicameral legislature? Why do you require 2 houses? Sorry. Yeah, go ahead. Should I? Yeah. Sir, as the constitution makers of our, they saw that in the federal system in which there are 3 tiers of smoothly. Okay. Not like that. चलिए रहने दीजिए. I would not elaborate upon the definition of Rajya Sabha since Sukhbir Singh Badal साहब ने already maximum points बोल दिए. I'll directly head to the last question जो आपने पूछा था कि basically 2 houses की जरूरत क्यों है? तो as you can see, Rajya Sabha represents the state and क्योंकि एक state assembly में सरकार उनकी बनती है जो रूलिंग में होती है. तो राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जहां जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट को. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई दूसरी पार्टी रही एंड अगर उनका कोई पर्टिकुलर एजेंडा रहा तो फिर फॉर पासिंग अ बिल फॉर द entirety of the country you also need the opinion of the regional parties as well who are governing a particular state. And that is the reason the functioning or the functioning of Rajasthan is also, and that's the very reason that whenever a bill, the bureaucracy of the state, उसमें priority राज्यसभा को दी जाती है. For example, if there is a bill which would significantly change the UPSC pattern or the public services exam, तो फिर वहाँ पे priority हम राज्यसभा को देंगे. I think that is what I think. All right, okay. All right, चलिए. So now I speak. I believe people enough time and heard your opinions. जब आजाद हुए थे, at the time of our independence, we were divided into the numerous states, right? Princely states. Kudos to Sardar Vallabhbhai Patel and his contribution that today we see a united India. उस टाइम पे जब बात हुई तो एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एक होता है इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. सो इन ऑर्डर टू केटर टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हमने राज्यसभा अडॉप्ट करी थी. अब वो जैसे आप लोगों ने बोला, चाहे ऑल इंडिया सर्विस, मरी वेली इनसे संबंधित बातें हो, उन सब में राज्यसभा का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ मूविंग ऑन, और इसीलिए हम राज्यसभा की ओपिनियन ही कंसिडर करते हैं.
और एक चीज ये भी है कि दो दिस माइट साउंड अ बिट नाइव, बट उस टाइम ये एक ट्रेंड में भी था कि बाइकैमरल हाउसेस हुआ करते थे बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज के। सो हमने भी उस चीज को अडॉप्ट करा, हमें हमारी डाइवर्सिटी को एड्रेस करना था, सब कुछ करना था, सब आप लोगों ने बात ऑलरेडी कर ली। Now moving on, let's talk about the other aspects. Indian Parliament has three organs, या लोक सभा या राज्य सभा and the President of India. जिन लोगों को दो ध्यान थे उन्हें बता दूं कि नहीं, तीन होते हैं, because एक बड़ा बेसिक सा स्टेटमेंट होता है, a bill after being passed by the Parliament is considered a law or an act. So कोई भी बिल जब पार्लियामेंट से पास होता है तो पार्लियामेंट में तीनों लोकसभा, राज्यसभा और या प्रेसिडेंट, ऑल थ्री ऑफ देम आर इंक्लूडेड। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, कुछ बातें आप लोगों ने करी थी। कुछ राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करे जाते हैं फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स लाइक आर्ट ऑफ कल्चर, साइन दुलकर was a Rajya Sabha MP. So yeah. Moving on, लोकसभा के जो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शंस 2019 में हुए थे। The next are expected to be in 2024 अगर मोदी जी ने चाहा तो। Moreover, लोकसभा को ज्यादा प्रोफाउंड या लोकसभा को ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा रिप्रेजेंट्स द is considered to be the direct voice of the people. Okay, लोकसभा के क्योंकि इलेक्शंस जो होते हैं वो they are your general elections, so therefore लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं elected people, and thus they are given more responsibility and powers, especially in terms of money bill and all. Now that is Lok Sabha for you. बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. Let's talk about the rules and procedures of Lok Sabha. बहुत ज़्यादा नीदर राज्यसभा में भी नहीं. So give me a minute please.
Yeah, sorry everyone. My sincerest apologies. I believe I'm audible, right? Hello. Am I audible, people? Sir, you were not audible. Your voice was cracking. Am I audible now? So your voice is breaking. Just give me a minute. हाँ जी, अब ठीक है? It's audible now, sir. Yes, sir. So moving on, let's talk about the next thing. So I've told you about the various organs of the Indian Parliament. We were to start with the rules of Lok Sabha. Now, Lok Sabha mein, as far as our topic is concerned, it isn't a money bill. So हम money bill में नहीं जाएंगे. It is a plain discussion. उसके बाद अगर गवर्नमेंट की इच्छा होती है, if they want to come up with a bill, it is their prerogative. Or any other member, if they feel like coming up with a bill, it's their sole right. Now, as far as the Lok Sabha, our Lok Sabha here at PCGT Nyp is concerned, we'll start with opening statements. The first opening statement will come from the Leader of the House, that is the Honorable Prime Minister. So your voice is breaking again. So they will have the first opportunity to speak. Opening statement. We will be having opening statements and the opening statement will be given by the सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ, मुझे पता है भाई. All right, so the last opening statement will be given by the leader of the opposition or the leader of the largest party in the opposition, which in our current scenario is Adhir Ranjan Chaudhary. If it happens that he isn't here, therefore we'll decide someone else to serve as the leader of opposition. तो ये दो पक्के होते हैं. इनके अलावा बाकी जितने भी हैं, the other 6 opening statements we'll decide on that particular dates. Are we clear? So could you just please repeat about your opening statements again? What? Could you just please repeat about your opening statements? Like I got the part about the who will speak the last opening statement, but before that it was not clearly. The first opening statement by the Prime Minister or the Leader of the House, the last by the Leader of Opposition. Opening statement is where you introduce the agenda. Being the Prime Minister, आप agenda introduce करते हैं. You talk about what the House is expected to do in the coming 2 days. ठीक है? As an opposition leader, आप किसी भी discussion पे ये थोड़ी कहेंगे कि बोलने नहीं agrarian crisis पे क्यों discuss कर रहे हैं? Agrarian crisis कुछ है ही नहीं, सब बढ़िया चल रहा है. तो आप उसमें rebut नहीं करते हो. उनके proposition को आप rebut नहीं करेंगे. You will say
where the government has failed. So that is the role of opposition as far as opening statements are concerned. कि ये कोई बिल नहीं है जिस बिल को आप oppose करोगे. All right, it is just a call for discussion. What you are expected or what is your domain, right? Am I clear? Opening statements clear? Yes. Then there are two types of discussions: short period discussion, long period discussions. As far as long period discussions are concerned, हमें उसमें deal नहीं करना. We'll be basically talking about a short period discussion. In short period discussion, you specify the subtopic to the current agenda at hand. Am I clear? So अगर मेरा जम्मू एंड कश्मीर है, my subjects और कश्मीरी पंडित्स इन जम्मू एंड कश्मीर. तो बड़ा एजेंडा जम्मू एंड कश्मीर एग्जिस्ट कर रहा है, छोटा एजेंडा रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, there exists you need to specify, like, I, Vedansh Sharma, would like to raise a short period discussion for a discussion on the topic rehabilitation of Kashmiri Pandits in Jammu and Kashmir for a total time period of 20 minutes per speaker's time being 1 minute. जो UNA USA का mod और unmod होता है वैसा थोड़ा सा बनाएंगे, but short period discussion रहेगा, moderated caucus नहीं है. अभी क्लियर? अनमोड कुछ नहीं होता. हाँ, राजनाथ सिंह जी बोले. So the motion for that for the short period discussion, can that be raised by a member of the opposition, or can it be raised also by a member of the government? सर कोई भी. Okay, yeah. भाई डिस्कशन करने का हर का अधिकार है ना. आप बीइंग दी गवर्नमेंट ये चाहोगे कि ऑपोजिशन नहीं बोले? मतलब आप तो चाहोगे पर वो बोलेंगे. हाँ, yes. ठीक है. Yes. Now the next thing is there exists 3 R's. हाँ, निर्मला जी बोले. So sir, when will be the minister? क्यों बोलेंगे आप? मिनिस्टर हो पर मेंबर हो ना. ये मिनिस्टर का सब मिनिस्टर जो है वो केवल एक आपको क्वेश्चन आवर के टाइम पे बेनिफिट मिलता है कि क्वेश्चन आवर के टाइम पे द क्वेश्चंस कैन ओनली बी आस्क्ड टू मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिप्लाई. बाकी बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है. सर दैट पर्टिकुलर domain is mine. I decide when we speak. Yeah. Okay, sir. And sir, I will be speaking on the topic only the aggregation issues. The agenda, what is the? Anji? Yeah, I will be speaking on the topic only the aggregation issues. सर आपकी मर्जी, आप चाहो जिस पे बोलो. आपके 2 मिनट है. मतलब वो मैं टू मतलब you are an honorable member of parliament representing the voice of 5 lakh plus people out here. तो मेरी क्या हिम्मत है कि मैं आपको गाइड कर दूं कि आपको ये बोलना चाहिए या ये नहीं बोलना चाहिए. सर ओके, प्री डिसाइडेड पोजीशन केवल प्राइम मिनिस्टर की और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की होती है. बाकी 6 पोजीशंस खुली हैं. उन 6 पोजीशंस पे हम ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर डे ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस वी विल सेलेक्ट पीपल जिनको बोलना होगा. उसके अलावा एज सून एज वी आर डन विथ योर ओपनिंग स्टेटमेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स योर शॉर्ट पीरियड डिस्कशंस. शॉर्ट पीरियड डिस्कशंस में
जो रेस करेगा वो तो बोलेगा ही, और बाकी भी जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। Am I clear? Yes, sir. तो इतने कंफ्यूज क्या लग रहे हो? I don't know. I was just confused that because the agenda written for us is farmers aggregation deliberation. No? So that's why. So And you told no. So you told that we can talk about we can have this we can talk about anything or something. हाँ सर, तो मर्जी। सपोज करो इफ दी एजेंडा इज जम्मू एंड कश्मीर, और आप खड़े होके बात कर लेते हो कि बोले थोड़ी करेगा आप। बचाओ, गो अहेड। यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू बोलना मत बोलो, 2 मिनट 1 मिनट जो भी टाइम आप लोग डिसाइड करेंगे, दैट इज योर टाइम। आई एम लीस्ट कंसर्न्ड एज टू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक और व्हाट यू विल स्पीक। Okay, sir. ठीक है, आपको क्या बोलना है वो आप जानो, आपका काम है, प्लीज कंसर्न। हाँ, बट ऑब्वियसली हम इन एन एकेडमिक सिमुलेशन, तो यहाँ पे आप मार्क करे जाओगे, और आप मार्क तभी करे जाओगे जब आप एजेंडा पे बात करोगे। मैं क्लियर? Yes, sir. चलिए, बढ़िया। 3 आवर्स होते हैं, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, डिस्कशन आवर। Question hour is, in question hours, all the questions are posed only towards the government. You ask the concerned minister. ठीक है, अगर आपके प्रदेश में बाढ़ की समस्या है तो आप उसका सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी जी से नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन आप करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत से, who happens to be the minister of for जल शक्ति। तो ये the opposition ask questions to the treasury। ट्रेजरी मतलब जिनके पास खजाना होता है। खजाना आर में क्वेश्चंस आर टू द उसमें द कंसर्न्ड मिनिस्टर इज why 37 people died drinking। तो मैं ये पूछ सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री होते हुए पूछ सकता of immediate national concern can I just wanted to confirm something, that the opening statement जो होगा that will be given by the Prime Minister and the closing statement will be given by the leader of the opposition. Rest जो polls होंगे that you will be deciding, right? There will be around 8 to 10 opening statements. The first person to speak or give a first opening statement will be the Prime Minister, and the last one to give the last opening statement will be the leader of opposition. Yeah, and the जो बीच में रहेंगे, like the middle ones, they will be selected by you. Like you will be telling who all will be there. Okay, thank you. I won't be telling, ऐसा नहीं होगा कि मैं आप पे सरप्राइजेस थ्रो करूंगा। I'll ask you people कि कौन बोलना चाहता है। If you will raise hand and we'll recognize you, then you are very much welcome to speak. This is similar to the model United Nations, right? We have a moderated caucus, similar है उससे। नहीं मैडम, moderated
पे शॉर्ट भी नहीं होता टिकट। Okay. ठीक है, हाँ भूपेंद्र यादव साहब फरमाएं। सर जो बिल पे वोटिंग होगा वो कैसे होगा, मतलब कि हैंड रेस होगा कि ऑडिबल अरे वोटिंग? भाई साहब काहे, एक सेकंड इतनी तेज काहे भाग रहे हैं? अभी मैं डिस्कशन पे नहीं आया हूँ, बिल पास करा के कमेटी खत्म करा, 2 दिन का काम अपन 1 घंटे में कर लिए हैं। आपको भी बधाई, मुझे भी बधाई। थामो यार थोड़ा, थामो, मतलब मुझे बुलाया है, पैसा दे रहे हैं तो कुछ करने के लिए दे रहे हैं, रुको 2 मिनट। ठीक है, 0 आर क्वेश्चन आर क्लियर? कोई डाउट किसी को? लाल रोसांगा साहब, एनी क्वेश्चन? यू हैव योर हैंड रेज्ड। यस सर, वो जो क्वेश्चन आर के क्वेश्चंस है वो सब हम लोग को पहले बताने पड़ेंगे गवर्नमेंट को या फिर ऑन द स्पॉट पे? हाँ नहीं सर, क्वेश्चन आर के क्वेश्चन वैसे आप वर्बली बोल के पूछ सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कमिटी यार। पहले बता देते हैं वैसे स्टार्ट क्वेश्चन तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम उन्हें भी मिल जाता है आंसर प्रिपेयर करने का, बट नहीं बताऊंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो चैट में लिखे ही जाएंगे। अब सिंस वी आर इन अ कंपटीशन तो वी एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू बी डिलिजेंट इनफ कि वो देखता रहे चैट में अगर उस पर कोई क्वेश्चन है तो। स्टार्ट एंड स्टार्ट। सर फिर अनफेयर हो जाएगा ना, मतलब अगर ऑन द स्पॉट पूछेंगे और क्या किसी को unfair नहीं हो आया जाएगा? कुछ? सर मंत्री हो, रिसर्च करो। मतलब ऐसा नहीं होता 1 घंटे पहले बंद करवा देंगे, वो छोटी मोटी डिपेंडिंग अपॉन हाउ फॉर द कॉन्फ्रेंस, कितने लोग हैं, क्या हर क्वेश्चन वर्बली लिया जा सकता है। थैंक यू। क्लियर? हाँ निर्मला जी बताएं। सर बिल लाना जरूरी है? मैंने कब कहा? नहीं, एजेंडा पे मार्क्स मिलेंगे तो बिल पे भी मार्क्स मिलेंगे, वो क्लैरिफाई करना था। यार तुम मार्किंग पे पहुंच गए, मैं प्रोसीजर पे नहीं पहुंचा हूं अभी ढंग से। एक वो बिल के पासिंग के प्रोसीजर पे पहुंच गए हो, एक तुम फाइनल मार्किंग में पहुंच गए हो, तो मतलब मुझ गरीब को भी तो मौका दो कुछ करने का जीवन में। Asking. First, I'll post the questions on chat, and then जो जिस particular minister के लिए questions है, that particular minister will see, and then will you be telling कि okay, this person has to ask questions and can ask questions now, and like what will be the entire procedure for it? All right, okay. 2 मिनट बाद I'll get back to your question. हाँ सुदीप बंदोपाध्याय, your question sir. Sir, as am I the only one who is having a difficulty in hearing it? No, sir. No, the audio is not clear. Not audible. Sudeep, we can't hear you. If possible, kindly drop down your question in the chat box. We will try and answer. सर जो बिल नंबर सर आप तो मंत्री हो, बट रियलाइज? जी सर, यस सर। तो फिर तुम प्राइवेट मेंबर बिल क्यों लाओगे? सिंगल मेंबर नहीं कहते उसको, प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर बिल। हाँ तो वो पहले तो ला तो
ऐसा मन का भी इच्छा रहता है थोड़ा। अरे मन का क्या रहेगा, देश चला रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या कोई? सर यू आर दी गवर्नमेंट, आप ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल थोड़ी लाओगे, आपके पास आपकी मिनिस्ट्री है, कल को पता चले ये क्या करेंगे हमारे क्या नाम है इनका, नरेंद्र सिंह तोमर साहब बेरोजगार मंत्रालय में खा जाओगे आप। सर गलत बात है सर, ये वर्क शोल्डर टू शोल्डर। सर बट कैबिनेट, सर अभी कैबिनेट में कौन है कौन नहीं उसका भी पता नहीं चला है। कौन बोला तुमको? मोदी कब की बना के बैठे हैं, ये एकनाथ शिंदे साहब का नहीं पता, मोदी जी का पता है। बट अभी तो कुछ कमिटी बना है कैबिनेट का हमारा। एक सेकंड देखो, ऐसा है सर, ये एक्चुअल लोकसभा है, मान के चलो तुम बहुत ब्रिलियंट एडवोकेट हो, तुम बहुत गजब आदमी हो, तुम राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से संबंध रखते हो, और तुम काफी तगड़े चुनाव मैनेजर हो, और उसी के रिवॉर्ड में आपको मंत्री बनाया गया, सो फील हैप्पी। ठीक है, हाँ अब चाहे तुम व्यक्तिगत जीवन में कितने भी लंपट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फॉर द 2 days of the conference you are Bhupendra Yadav and you are expected to act and behave like that. Alright? Sir, am I audible now? और बाकी ऐसा है, पीएमओ इंडिया की वेबसाइट खोलिए और उस पे आप देखिए द लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, और गलती से आपका भी नाम है उसमें। ठीक है, हाँ मतलब करो कुछ, युवा उत्थान कुछ करो, देश में तरक्की लाओ। हाँ सुदीप बंदोपाध्याय जी, कोई सी भाषा जो आपको अच्छी लगती हो, मराठी भी मुझे लगता है ले और दृश्य संभाल लोगे ना, मराठी भी है तो। अरे तुमको कुछ बोल लो। ऑलराइट, चलिए। हाँ तो ये क्वेश्चन आर एंड 0R डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम होता है, एट रैंडम थ्रो नहीं होंगे सवाल। सपोज करिए आज हम 31st कॉन्फ्रेंस है, 30th तक हमने बोला शाम 5 बजे तक जितने क्वेश्चंस आएंगे उन्हें हम 31st को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वील डेडिकेट 1 hour फॉर क्वेश्चन आर, 1 hour फॉर 0R। तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होंगे, एट रैंडम कभी भी 0R क्वेश्चन आर चालू नहीं होगा। Am I clear? Mamta Banerjee ji, did I answer your question? Sorry, sir, I forgot to raise my hand. जी? No, yes, sir, I had asked the question for the this Did question. you get the answer? Yeah. No, you asked. Yes, sir. Yes, sir. चलिए perfect. हाँ निर्मला जी फरमाएं। So sir, I was just telling कि everybody, you will decide the time now, how many minutes I will speak or. No, sir. I won't decide anything. मतलब मैं बहुत आप लोगों की कृपा से इस चेयर पे बैठा हूँ। It is you people who are expected to decide. I'll just moderate the things for you. कि मैं आपसे पूछ लूंगा किस समय आप लोगों को 0R या क्वेश्चन आर चाहिए। अब इसमें मेरे को आपकी व्यक्तिगत ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। I'm least concerned with your individual opinion. Whatever the majority of the house decides, मेरी कमेटी उस हिसाब से चलेगी। इसीलिए मैं जितने भी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, the first word I am using in this statement is suppose। ठीक है, तो it is you people who will decide कि एक दिन में मतलब 2 दिन में एक ही 0R चाहिए, 2 दिन में 2 होने चाहिए, का कोई पॉइंट बनता नहीं है, तो वो इतनी भी नालायकी नहीं हो सकती। Yes sir, and I had one more question. Agenda also, so it will be, who will be deciding my time limit? Sir, your committee will decide for how long each and every person is expected to speak.
Okay, sir. The opening statements are generally for 2 minutes, but we'll even put it to vote. You can keep it 2, you can keep it 1.5. Your committee decides. Short period discussion, again 1 minute, 1.5 minute, 2 minute. Your committee will decide. मेरे को कोई मतलब नहीं है ना, मुझे कोई फर्क पड़ रहा है उस चीज से. It is you and your committee will vote upon each and everything and decide कि क्या कोर्स होगा इस कमिटी का आगे, है ना. मैं केवल आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ. जितने भी ये जो चीजें सर्टेन है वो मैंने आपको बता दी. दी फर्स्ट स्पीकर इन दी ओपनिंग स्टेटमेंट विल बी दी प्राइम मिनिस्टर. तो वो डिसाइडेड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता. अब आपको प्राइम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो नहीं मिला, आई फील सैड फॉर यू. हाँ सर, तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि कमिटी मतलब लोकसभा मेरी कमिटी, तो मैं लोकसभा के लोग बोलेंगे कि मैं कब पूछूंगा ना, बोलूंगा मतलब, तो कितने मिनट के लिए बोलूंगा. सर सपोज करो मेरा एजेंडा है जम्मू एंड कश्मीर पे. हाँ. ठीक है, उस पे एक सब एजेंडा उठाया गया, रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स. ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि आपको उस पे बोलना है. अब जिसने वो सब एजेंडा उठाया था उसने टाइम फ्रेम रखा हुआ है 1.5 मिनट. ठीक है, अब आपको अगर उस पे बोलना है, यू विल रेज योर हैंड एंड आई विल रिकॉग्नाइज यू, तो आप 1.5 मिनट तक बोल सकते हैं. ओके. अगर आपको नहीं बोलना, यू प्लीज डोंट रेज योर हैंड. ओके सर. ठीक है, क्लियर है? ओके सर. तो अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल उस जोन में आ जाते हो कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो कमेटी में, उससे पहले मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा. बट आई विल एटलीस्ट एंश्योर दैट एवरीवन स्पीक्स एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे. तो वहां तक अगर बिल्कुल लास्ट टाइम तक आते आपने पूरे दिन में कुछ नहीं बोला, तब मैं आपको जरूर मजबूर करके कुछ भी बोलने के लिए कहूंगा. बट अदरवाइज आपकी मर्जी है, बोलना चाहे बोले, नहीं बोलना की इच्छा मत बोलो. Am I clear? Yeah, discussion खत्म होने के बाद let's come to the last topic at hand, which is your bill. बिल का प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आप लोकसभा की वेबसाइट से देख सकते हैं. प्रोसीजर और फॉर्मेट हमें एज इट इज चलाना पड़ेगा, मजबूरी होती है, मजाक नहीं करते उस चीज के साथ. Now, each and every bill, a bill can be a private member's bill, which can be introduced by an individual member of parliament. A bill can be a government-sponsored bill, which is introduced by the ministry concerned. तो अगर हम agrarian crisis पे बात कर रहे हैं, तो जो concerned ministry है, वो Ministry of Agriculture है. राजनाथ सिंह हमारे पास मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, तो वी विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू गिव दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो टू समवन एल्स जो कमेटी में मौजूद हो, ताकि काम आगे चलता रहे. सो सब चीजें बहुत एक्सटेंड तक नेगोशिएबल होती, कोई समस्या नहीं होती. आप जो भी आप बिल लाएंगे उसका फॉर्मेट लोकसभा की वेबसाइट पे पड़ा है, वहां से देख लीजिएगा. उसमें समझाने ऐसा कुछ बिल हैज टू गो थ्रू 3 रीडिंग्स. अब वो सवाल जो बहुत पहले हमने बात करी थी, द फर्स्ट रीडिंग इज, अगर मैं तो सबसे पहले टेबल का स्पीकर उस बिल के क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक करता है, उस बिल का फॉर्मेट वगैरह चेक करता है, देन ही पुट इट फॉरवर्ड टू ऑल मेंबर्स. उसके बाद होती है बिल की फर्स्ट रीडिंग, जिसमें जो मेंबर बिल प्रपोज करता है वो पूरा बिल एक बार पढ़ देते. क्लियर? उसके बाद वी सीक अमेंडमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर बिल. क्लॉज बाय क्लॉज उसके हर पॉइंट पे अमेंडमेंट सीक करे जाते हैं. हर अमेंडमेंट पे वोटिंग होती है. अगर वो पास होता है, वेल एंड गुड, इट इज इंक्लूडेड एंड कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अ बिल.
अगर पास नहीं होता दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट खेल खत्म हो जाता है। This procedure is called the second reading. अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन एक बार हो जाता है तो जो मेंबर बिल प्रपोज इज कंसीडर्ड एज द थर्ड रीडिंग, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ बिल। क्लियर है निर्मला जी? सवाल एजेंडा उस दिन एग्री रिफॉर्म से तो बिल उस पे ही आएगा ना? आना तो चाहिए। अब आप फाइनेंस मिनिस्टर हो यार, इंडिया के देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था आपके हाथ में, आपकी मर्जी जो बिल ला दो, पर फिर वो समस्या वही आ रही है ना कि एकेडमिक सिमुलेशन है, तो आना उसी पे चाहिए जो एजेंडा है हमारा। यस सर। हो गया कुछ और Okay. पूछना? No, actually, I got this discussion में है it's deliberation on farmer reforms. Sir, bill is the conclusion of a deliberation from this house. ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि आप हम लोग बैठे हैं एज पार्लियामेंटेरियंस, वी डिस्कस थिंग्स, हम चाय नाश्ता करें, बढ़िया चाय बिस्कुट के बड़ा पाव के दौर चलाएं, बारिश का मौसम भी हो रखा है, और हम हमारे घर चल जाएं, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये होता है पार्लियामेंट में। हाँ, हर चीज बिल में कल्मिनेट नहीं होती है, ठीक है, बट बिल इज द फाइनल डॉक्यूमेंट जिसके बाद उस पर डिस्कशन का स्कोप वैसे बचना नहीं चाहिए टेक्निकली। तो डेलिब्रेशन है, बिल्कुल आई एग्री डेलिब्रेशन है, बट व्हाट इफ इस डेलिब्रेशन से हम कुछ कॉन्क्रीट निकालते हैं और हम बाय वे ऑफ अ बिल भी इंट्रोड्यूस टू द कॉमन पब्लिक एट लार्ज। yeah, like by discussing something I hope I'm concrete clear. comes. Yeah sir. हाँ, मतलब हमें उम्मीद है आपसे आप कुछ कॉन्क्रीट लाओगे, नहीं आता है कोई बात नहीं। Okay, हमें no, हमारे देश के नेताओं से भी तो बहुत उम्मीदें हैं ना। हाँ, actually no sir, I was just telling पर because वो नहीं कर रहे पूरी। अगर क्योंकि हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कंफ्यूज था क्योंकि फिर मैं डिलिब्रेशन पे वर्क करूंगा ना कि क्या डिस्कशन। आप किस पे वर्क करोगे वो मेरे को क्या पता। Okay sir. No, it is yet again your choice. If you feel like working, work. If you don't feel like, relax करो, chill करो आराम से। राजनाथ सिंह जी। हाँ यस सर, आपने जो सेक्रेटरी की बात की थी अमेंडमेंट्स की, तो वहाँ ये एमयूएन की तरह फ्रेंडली अमेंडमेंट्स, नॉन फ्रेंडली अमेंडमेंट्स की बात नहीं है ना, लाइक मोर देन सर यार 50% will be क्या required for होता है non ना, friendly। हाँ हाँ नहीं, एमयूएन वाले फ्रेंडली अनफ्रेंडली अमेंडमेंट्स नहीं होता है, बट समस्या क्या आ जाती है कि ओरिजिनल पार्लियामेंट में तो ऐसा होता है कि आपको बहुत बुरा माना जाएगा इफ राजनाथ सिंह इज प्रपोजिंग एन अमेंडमेंट और अ बिल प्रपोज्ड बाय निर्मला सीतारमण, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपकी कैबिनेट है और आपको यही नहीं पता कि दूसरा मिनिस्टर क्या लाना चाह रहा है। ठीक है, या तो आप आज से पहले सो रहे थे तो वो आपके लिए खराब है, या फिर आपकी कैबिनेट इतनी अतरंगी तरीके से चल रही है कि एक दूसरे को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या बिल आ रहा है, क्या है। तो अब ये लोकसभा में तो होता नहीं है, बट येट अगेन क्योंकि हम एक एकेडमिक सिमुलेशन में और हमें इंडिविजुअल मार्किंग पे भी ध्यान देना है, तो वी डू अप्रिशिएट अगर कुछ आ रहा है तो उसे थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा, बट वो यही है कि फ्रेंडली अनफ्रेंडली की बजाय जहां तक हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट रख रहे हो विच इज स्पेसिफिकली योर्स और वो मुझे बिल में दिख रहा है, तो बेसिकली आई मार्क यू फॉर दैट, राइट। अदरवाइज अब आप अलग से कोई अमेंडमेंट आके करते हो तो कर लो, बट एडवाइजेबल नहीं। ठीक है कि इवेंचुअली अगर सपोज करो कल को एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब आपकी सुनने को तैयार नहीं है, बोले नहीं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम्हारी बात, अब ये यहाँ पे भी तो है ना, अंदर भी तो हम एक कंपटीशन में, तो अगर वो नहीं सुन रहे तो लाओ देखेंगे, फिर तब की तब देखेंगे, है ना। अभी इतना चिंतित होने वाली बात नहीं है। वैसे इट इज नॉट एडवाइजेबल बीइंग द सेकंड इन कमांड फॉर द गवर्नमेंट कि आप
एक्सपेक्ट करें कि कोई अमेंडमेंट फ्रेंडली लाते हो। फ्रेंडली है तो भाई घर में आओ ना, लेके आओ ना तुम्हारे पास जो भी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। 5 तरीके के पॉइंट्स होते हैं, वही एम्बिएंट टाइप की चीजें हो गई है थोड़ी। का सबसे इम्पोर्टेंट होता है पार्लियामेंट्री पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री nothing which is said on the floor of the house cannot be brought in any court of law। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है। एक ये होता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे रह के आप झूठ नहीं सकते, ये कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर हम एक्चुअल लोकसभा के कंटेक्स्ट में, हमारे पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में बात करें तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज नथिंग बट for the chairman as far as Rajya Sabha is concerned for any procedural glitch। अगर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन कोई प्रोसीजरल गलती करते हैं तो ओरिजिनल लोकसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, जहां तक हम एकेडमिक सिमुलेशन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज को पॉइंट आउट करने के लिए भी एक्सेप्ट करेंगे हमारे खिलाफ, तो बीइंग द चेयर और बीइंग द स्पीकर वो हो गई। Am I clear? बाकी पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी आपको जब अच्छा लगे तब सवाल पूछ लीजिए, मर्जी है आपकी। पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, आपका घर है सर। इफ यू फील लाइक गोइंग आउट, इफ यू फील लाइक हैविंग अ फोन कॉल, इफ यू फील लाइक ईटिंग समथिंग, if you feel like your AC is too hot or cold, I'm sorry I can't help you in that case। तो आप अपने एंड पे सॉर्ट आउट कर लीजिए। एंड रिप्लाई तब होती है जब आपको पर्सनली नाम लेके डिफेम करा गया हो, कुछ गलत बोला गया हो आपके लिए, नाम लेके स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करके कि अगर मैं कह दूं कल को राहुल गांधी चोर है इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, देन राहुल गांधी इज हैविंग अ राइट टू रिप्लाई। Am I clear? सिंपल है सर। हाँ ममता जी बताएं। Point of parliamentary inquiry में could it be right after the opening speech? मतलब if I'm asking a question, क्या opening speech में speech के बाद if I want to have like if parliamentary inquiry बोल सकते हैं ना मैम? पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी में आप सवाल मुझसे करेंगे। ओके। और वो सवाल होगा आपको बिल टेबल करना है, बिल कैसे टेबल करना होगा। हाँ सॉरी ठीक है, इसमें पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। लोकसभा में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है मेन की तरह। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए डेजिग्नेटेड आवर्स डेडिकेट करके रखते हैं। तो अगर आपको आपस में कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन वेरी सिंपली आस्क इट ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर और 0 आवर। बाकी फिर क्योंकि हम एक सिमुलेशन में है तो वी कीप इट फ्लेक्सिबल कि अगर सपोज करिए जनता बहुत ज्यादा नहीं है या 40-50 और आराम से, तो वी कैन थिंक ऑफ हैविंग देखें करेंगे। मैं भी ला सकता हूँ अगर कोई ऐसा लग रहा है कोई गलत पॉइंट कोई रूल से खिलाफ जा रहा हो। हाँ लाओ ना सर, वो मुझ पे आता है क्योंकि आपको but we have the right to correct you ना। हाँ, you have all the rights to correct me sir, I am your humble servant sitting out here।
Okay, sir. ठीक है, is it clear? Yeah. ले देव दृश्य कुछ भूल रहा हूं मैं? Sir, you covered it brilliant. हाँ जी, Sir, you covered it very brilliantly. You covered everything, I think. अरे थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। हाँ नहीं, कुछ भूल रहा हूँ तो वो पॉइंट आउट करो, बाकी दुकान बढ़ाते हैं, फिर वो क्या काम। सर कोई और क्वेश्चन है? सर बाइलिंगुअल कमेटी का क्वेश्चन था बस एक आपने कहा। मारवाड़ी मुझे आती है, गुजराती आई कैन हैंडल, मराठी ये लोग संभाल ही लेंगे। ठीक है, I know that taken for a conference in Maharashtra, but yes. अरे वोटिंग तक चलो, ऐसी बातें नहीं करेंगे, गंदी बातें नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को मतलब नहीं है, आप पहुंचने दो। ऑपोजिशन में एक की लीडर जो पहुंचने नहीं देंगी वो मेरे को पता, लेकिन बट आई विल ट्राई टू कि बिल हमारा पहुंचे वोटिंग तक। एक ही लीडर है जो कि नहीं पहुंचने देंगे वोटिंग तक, और लास्ट में हंगामा। सर आपको कैसे पता दूसरा यार ऑपोजिशन देखो तो आप सुनो, जानते तुम नहीं हैं। ये ईडी वीडी वाले जो सुनोगे क्या? मुझसे छोड़ो बात, रहने दो, फालतू आपस में निपटते रहना है बाद में। हाँ जी निर्मला जी, सवाल। सर हम आप हमको पर्सनली कंटिन्यूसली आप हमको हम क्या करते रहते हैं, आप मार्क करते रहोगे ना जब हमारा बोलने का टाइम आएगा, उसी बेसिस पे कि मतलब हमने कैसा बोला है, हम फर्स्ट प्राइज जीतेंगे कि लास्ट प्राइज जीतेंगे कि कुछ भी जीतेंगे नहीं, स्पेशल मेंशन जीतेंगे। निर्मला जी, मैं हैव योर क्वेश्चन अगेन प्लीज, मैं सुन नहीं पाया था ढंग से। सर आप कंटिन्यूसली हमको मार्क करते रहेंगे ना, कि हमको उससे मालूम पड़ेगा ना कि हम लास्ट में जाके फर्स्ट प्राइज जीतेंगे या सेकंड प्राइज जीतेंगे या थर्ड प्राइज जीतेंगे। हेलो हेलो हेलो, अरे यस, अच्छा, सॉरी फॉर दिस। हाँ निर्मला जी, कैन आई हैव योर क्वेश्चन अगेन? या तो सर आई वाज आस्किंग कि आप हमको कंटिन्यूसली मार्क कर, इस पे हम फर्स्ट प्राइज हमको मिला या थर्ड प्राइज मिला, वो जज इसके अलावा और कौन सा मैकेनिज्म है आपके पास, और कैसे वोट दे सकता हूँ? हाँ सर, नो आई वाज जस्ट कंफर्मिंग अगेन, क्योंकि फिर उस हिसाब से मैं रेडी हूं माने कि मैं अभी बोलूंगा। तो मेरे को एक चीज बताना भाई, मेरे को दूसरा टेल मी कैसे तुझे मार्क्स दे सकता हूँ बिना तुझे सॉरी। ठीक है, but final not speak more than twice or thrice. Ab in that scenario, what करे जाएंगे, बट जो भी बोला जाए प्लीज एंश्योर आपके पॉइंट्स यूनिक
रिपीटिशन होगा, रिपीटिशन के मार्क्स नहीं होते हैं। आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे मैं काफी अच्छा मार्क करता हूँ, क्योंकि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मार्क करने का बड़ा बेसिक सा रीजन होता है। पहले तो यू आर पेन ऑफ लिसनिंग टू द तब आपको पता चला। आई मार्क पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स क्वाइट जेनरसली, रीजन आई जस्ट टोल्ड यू। और बाकी आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो ऑब्वियसली से दे विल हैव अ डिसेंट वेटेज। बाकी कुछ मार्क्स लॉबी के होते हैं, दैट आई विल डिसाइड वेदर इट इज पॉसिबल फॉर मी टू फिर ये वो I can decide on the D-Day only, conference वाले दिन. I'll let you know before the conference start formally, before we move into a formal session. I'll let you know what will be the final marking criteria, depending upon the lobbying. So, what word you use? I could not hear properly. बाकी marks किसके होते हैं? Okay, sir. ठीक है, before we move into the formal session, we will discuss the marking criteria for once, and that's it. तो और कोई समस्या किसी को? हाँ राजनाथ सिंह। Sir, I lost my connection in between. So ये पूछना था कि you talked about point of order. So हम पूछेंगे कैसे point of order? Like will it be verbally? Will we raise hand and ask, or will we type it in the chat? ये कुछ ऐसी चीज है ना जो D-Day के लिए रखो। अब सपोज करो 70 लोग आई कैन नॉट टेक्निकलिटीज है। आपको ये समझ आ गया ना पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, तो कैसे पूछेंगे वो तो डिसाइड कर लेंगे, घर की बात है। हाँ निर्मला जी। Pointers and point of information किस Madam, that will definitely perpetually raised or question. Are you sure this happens to your last? Sir, actually I am question. All right, okay. Yeah, then you have all yours. Very interested in it. That's why. बहुत कोई परेशानी नहीं। हमको टाइमिंग कल तक मिल जाएगा ना? यार ये काम मेरे पास नहीं है। Okay, sir. दक्षा? Yes, sir. इनको नहीं टाइमिंग Timing. All right, okay. हाँ दृश्य क्या बोल रहा था, आवाज नहीं आई ढंग से प्लीज। सर मैं ऑडिबल? यस सर वही बोलना था कि कल तक आ जाएगा शेड्यूल। चलिए परफेक्ट। आई बिलीव निर्मला जी ये भी शंका का समाधान हो गया। और कुछ? Thank you for the day. अरे thank you for the day. All right everyone, thank you for bearing with me and my slow internet connection. Bye bye everyone, take care. धन्यवाद बहुत बहुत। मुलाकात होती है 30 तारीख को। धन्यवाद सर। Thank you sir. Thank you sir, thank you, bye bye. I think we are done. हाँ। सर आप GLC में हो ना?
Sir, there are हेलो कुछ नहीं होता.